Hey everyone, how are you doing all? I hope you all are doing well and you all are safe. And hi, my name is Bhavna and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm going to do the clean makeup look. So basically, clean makeup look is a trend जो कि आजकल हर YouTuber कर रहा है, and that's why I decided कि मुझे भी ये करना है. Even though I'm not really good at makeup, but आजकल मुझे थोड़ा बहुत makeup करते करते आ गया है, so I think I can do that. And in shorter words, clean makeup is basically a good makeup look with a good base and all. Like इसको अभी हम हटाते हैं because I'm not really good at explaining such things. So yeah, and also I'm gonna be using some new products that I have got recently from Amazon because I really wanted to try out these products also. So that's how we are gonna do it. So now without any further ado, let's just get into the video. So before applying any sort of makeup on my face, I'm gonna do some skincare because that is also very important. If you are someone who suffers from acne and whenever this acne goes away, it leaves us with acne marks which when not treated correctly and effectively can actually cause discomfort to us. We may try different kind of solution to cover up this acne marks with makeup or try DIY tips, but these are the temporary solutions to this problem. Our real self and our real skin is concealed behind this filter of some kind. Now you can finally say goodbye to this stubborn acne mark with the dermaco's 10% niacinamide serum and 3% niacinamide foaming face wash. The best part is that the dermaco is designed by the dermatologist, which is why you don't have to worry about any skin issues. This is 3% niacinamide foaming face wash. You can apply this foaming face wash on a wet face and apply a generous amount of face wash in a gentle upward circular motion. Then you can rinse it off with lukewarm water and gently pat dry. Niacinamide is an active form of vitamin B3 and is the gold standard ingredient that actively works towards reducing acne marks and scars. After I cleanse my face, I use 10% niacinamide serum. You just have to apply 2-3 drops of the serum on your face and neck area. And then you can just massage it gently until the serum gets absorbed on the skin. This serum can be used every day and it helps to fade away the acne marks, and also it gives a clear, even textured skin. And please make sure to do a patch test before you try out these products. So this is how I take care of my skin, and now if we can finally head on to the makeup part. So at first I'm gonna use the Lakme Lumi cream which I recently got from Amazon. And जब भी आप मेकअप कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपना फेस अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करें. सो मैं भी वही कर रही हूँ अभी. नाउ आई एम यूजिंग लैक्मे अंडरकवर जेल प्राइमर. सो ये प्राइमर यूज़ करके ना मेरा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है एंड ये मेरे मेकअप को और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है. दिस इज़ Maybelline न्यू यॉर्क फिट मी फाउंडेशन. सो मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी एंड उसको फिर मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगाऊंगी. उसके बाद मैं एक ब्लेंडर के साथ उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी. ये बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग लुक देता है मेकअप को. फॉर कंसीलर आई एम यूजिंग इनसाइड कॉस्मेटिक्स प्रो कंसीलर पैलेट. सो मेरे फेस पे जो भी डार्क सर्कल्स हैं एंड जितने भी हाइपर पिगमेंटेड एरियाज हैं मैं इस कंसीलर को अप्लाई करूँगी. एंड उसके साथ साथ मैं कलर करेक्टर भी यूज़ करूँगी जो कि मैं अपने डार्क सर्कल्स पर ही अप्लाई करूँगी. और जब मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी तो ये मेरे फेस को एक बहुत ही इवनली लुक देगा. And now I'm gonna use this Maybelline का lipstick as contour because this is in the dark shade and मेरे face के according ये contour का काम भी कर देगा.
for blusher, I'm using my favorite Faces Canada All Time Pro Face Palette and मैं एक ब्रश यूज़ करूँगी एंड उससे मैं इस ब्लश को अपने फेस पर इवनली अप्लाई करूँगी। Now I'm using Inside Insta Ready Illuminating Highlighter in the shade of 02 Rose Gold. तो मैं इसे अपने नोज़ के टिप पे एंड चिक्स के एरिया पे अप्लाई करूँगी बिकॉज मुझे ये वाले पार्ट अपना हाईलाइट करना है। ये एक स्टिक वाला हाइलाइटर है ना, इसीलिए ये बहुत इजीली मेरे फेस पे अप्लाई हो जाता है। Now I'm gonna use this eyeshadow palette from Swiss Beauty. सो मैं अपना लुक बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं बस इस पिंक शेड को थोड़ा सा अपने आईज पे अप्लाई करूँगी। और अब मैं अपना फेवरेट आईलाइनर विच इज 𝐿𝐿 इंस्टा लाइनर अप्लाई करूंगी अपने आईज पे। Then I use this mascara from Maybelline. सो मैं इसे अपने लैशेस पे बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। आई एम नॉट इनटू फॉल्स लैशेस एंड ये मस्कारा बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है मेरी लैशेस को। At last I use this Maybelline Super Stay Matte Ink Liquid Lipstick in the shade of 15 Lover. ये शेड मेरे लुक को एक बहुत ही प्यारा सा फाइनल टच दे देता है। For the last step, I am using this Swiss Beauty lip gloss. तो ये मेरे लिप्स को एक बहुत ही प्यारा इफेक्ट देता है। I hope ये मेकअप सबको पसंद आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा है बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट मेकअप। मेरे से मेकअप मतलब अभी मैं सीख रही हूँ, तो ये एक अगर मैं सीख रही हूँ एंड इतना अच्छा मैंने किया, सो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड yes, this is how easily you can actually achieve this makeup look while using very minimum products. And yes, this was all for today's video. I hope you people found this video useful. If you did, please hit the thumbs up button and I'm going to see you soon in my next video. Until then, stay safe, take care, bye bye.